start one of the water treatment in that zeolite or permutate method. So what is zeolite? Zeolite is a crystalline structure which containing aluminium, silicon, oxygen inside its structure, whereas Na plus ion on the structure which is loosely attached. What is that? Zeolite is Na2Z, shortly represented as Na2Z. Its long form is hydrated sodium aluminosilicate. So Na2O, Al2O3, X SiO2, YH2O is the structure for zeolite structure, and it is shortly represented by Na2Z, where X is 2 to 10, where Y is 2 to 6. What is the principle for zeolite process? क्या है principle? देखो, principle में हमें क्या करना है? ये जो zeolite है, इस zeolite में से जो Na प्लस आयन है, ये क्या करेंगे? आपके पानी के अंदर जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है, कौन से? एक तो कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, इनको रिप्लेस करने का काम ये आपका zeolite करेगा. सो द प्रिंसिपल, Na plus ion of zeolite used to exchange the hardness causing salt like positive ions said to be calcium or magnesium present in the water. That is the principle of zeolite. So what is the diagram? Let's see the diagram. कैसी होती है प्रोसेस? डायग्राम. इसमें it consists of a container. एक कंटेनर होता है. There is an inlet through which you can pass hard water. यहाँ से आपने हार्ड वाटर अंदर पास किया. Inside the container there is a zeolite bed. Below the zeolite bed there is a gravels for percolation of water. At the bottom there are two outlets, एक for soft water, another for washing, and again at the top there is a one inlet through which we can add the brine solution or NaCl solution. Brine or NaCl solution. This is said to be the diagrammatical representation of zeolite. How it work? चलो इसका वर्किंग क्या होता है, प्रोसीजर क्या होती है, वर्क और प्रोसीजर चलो देखते हैं. So when we add hard water inside the container, so your hard water contain the positive ions Ca2 plus और Mg2 plus. ये जो पॉजिटिव आयंस की जो पानी को हार्डनेस क्रिएट करते हैं, इनको क्या करना है, एक्सचेंज करना है विद द हेल्प ऑफ zeolite bed. So there is a reaction. When our water contains, suppose CaCl2, which containing calcium 2 plus, when it come in contact with our zeolite Na2Z, there is a softening reaction occur. कैसे softening reaction? Na plus ion of zeolite used to exchange positive ions of hardness causing salt present in the water. So क्या होगा? There is a formation of CaZ plus NaCl. This is the first reaction and it is your calcium zeolite. अगर मैंने other salt लिया तो suppose Mg, बताओ, MgSO4. Suppose this type of salt is given. So when it come in contact with our zeolite bed Na2Z, क्या होगा? This positive ion get replaced by Na, and which type of zeolite form? MgZ. MgZ. And what is your byproduct? Na2SO4, sodium sulfate. So this type of softening reaction occur when our hard water containing these type of positive ions which causes hardness with zeolite bed. But there is a one stage. कौन सी stage? Regeneration stage. Regeneration किसका? Of exhausted zeolite. मतलब एक स्टेज पे आपके zeolite में से Na प्लस आयन जो होगा वो खत्म होगा. So it does not exchange the positive ions which makes hardness in the water. Therefore, at that stage, Na plus ion present in the zeolite, it get exhausted. That's why we have to regenerate it. हमें फिर से उसको regenerate करना है. So regeneration of exhausted zeolite can be carried with the help of NaCl solution present in the diagram.
how the regeneration occur. Let's see, for writing that regeneration reaction, write the above reaction, softening reaction in reverse form. So suppose calcium zeolite is formed when we add NaCl solution as a brine at the top inside the container. There is a formation of again our zeolite with formation of CaCl. So this is the way by which we can again regenerate our zeolite. So our main principle is zeolite is one of the water treatment process through which we can remove the positive ions present in the water, which makes the water hard. But negative ions present remain as it is. So this can be removed by using the washing process. Okay, so these are said to be the exact principle and the procedure as well as reaction for zeolite process. This process having few advantages and few disadvantages. क्या क्या एडवांटेज है देखो. द इक्विपमेंट रिक्वायर लेस स्पेस, इट ऑक्यूपाई इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इट इज कॉम्पैक्ट, इट रिक्वायर लेस स्पेस. ये है पहला एडवांटेजेस. कॉम्पैक्ट है, उसको कम स्पेस लगने वाला है. सेकेंड, ये जो प्रोसेस है, दिस इज द क्लीन प्रोसेस. द प्रोसेस इज क्लीन एंड इट रिक्वायर लेस टाइम, इसको कम टाइम लगने वाला है. थर्ड इज द वाटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस हैविंग द हार्डनेस, स्टिल दैट वाटर हैविंग द हार्डनेस 5 to 10 ppm. These are the advantages. Still this process of zeolite having the disadvantages. कुछ disadvantages है. क्या है देखो, अगर मैंने hard water, if your hard water contain dissolved impurities or suspended impurity, ऐसे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी अगर इस जियोलाइट बेड के अंदर जो पोर्स है इसके ऊपर गिरी, देन इट मेक्स ब्लॉक, वो पोर्स को ब्लॉक कर देगी. अगर पोर ब्लॉक होगा तो ये जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा. दैट इज द स्लो प्रोसेस, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. क्यों स्लो होगा? अगर आपका वाटर में कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होगी, टर्बिडिटी होगी, ऐसे टर्बाइड वाटर आपके जियोलाइट बेड के ऊपर गिरा तो वो आपके पोर्स को करेगा ब्लॉक. अगर पोर ब्लॉक हो गए तो वो जो पानी की प्रोसेस होगी वो होगी स्लो डाउन. सेकेंड, दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर दिस ओनली, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ आयन को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस होगी. लेकिन हमारे पानी में अदर सॉल्ट भी होंगे, Fe होगा, Mn होगा, अदर हेवी मेटल आयन होगा, तो उनको रिमूव करने के लिए वी आर नॉट यूजिंग दिस प्रोसेस. दैट्स व्हाई वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस. और थर्ड होगा, whatever the washing obtain it having the sodium chloride. देखो बाय प्रोडक्ट हमारा NaCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो whatever the washing that obtain from zeolite process it makes the ill effect of on boiler. कौन सा ill effect? That is the caustic embrittlement. Caustic embrittlement. So these are said to be the one of the water treatment said to be zeolite process. So this is for either 6 marks, 3 marks. I repeat, zeolite is one of the external water treatment. It is used for removal of positive ions only. Na+ ion of zeolite used to exchange positive ions present in the hard water. And the remaining process is structure, diagram, it's a principle, then procedure having reaction, that is softening reaction, regeneration reaction,